Very good morning to traders. Namaste and welcome to my channel Stock Guru NKS. स्टॉक गुरु एनकेएस चैनल जैसे कि आप जानते हैं एक डेडिकेटेड चैनल है फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स हु आर इंटरेस्टेड इन डे ट्रेडिंग थ्रू इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस। तो जो भी इस चैनल को जब भी जहां भी देख रहे हैं प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के सो दैट टाइमली नोटिफाइड हो जाएंगे आप व्हेन द स्ट्रीम स्टार्ट्स। So basically, I do a live stream for market on index day trades in options, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस। तो जो भी प्लीज़ इस चैनल को देख रहे हैं जहाँ से भी उसको सब्सक्राइब करके देखिए, बेल आइकन दबा के देखिए, so that you won't be missing anything. So market has started. It's around half an hour. So far nothing has happened. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में मैं अब आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा and we listen carefully to whatever I say. Definitely should help you in understanding better. So we'll start with the understanding what's happening across the globe. तो कल यूएस के markets were little weak as we could see and that's what is reflecting even now. अभी भी वैसा ही दिख रहा है. You got Brent above $85. तो बाकी अगर हमारी मार्केट की ओपनिंग के ऊपर आ जाते हैं हम फटाफट, तो देखिए इस वक्त मैं पहले बैंक निफ्टी का देखूंगा. कल 42,235 के ऊपर क्लोज होने के बाद आज 271 यानी बहुत फ्लैटिश ओपनिंग. लो 119 का बनाया है तो 42,100 को नहीं तोड़ा इसने और 42,329. अभी जस्ट जस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग देयर इज अ लिटिल ऑफ ब्लिप इन बैंक निफ्टी. इट्स मूव्ड लिटिल अप और अभी ये कैंडल बना है. ये 5 मिनट्स के कैंडल के स्ट्रक्चर्स हैं. So it depends on what kind of a time frame you would like to use, but I feel this is enough for you to get an idea of what's happening. Okay, तो ये पहली कैंडल बनी है जिसने डे फर्स्ट अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश. And we'll go through this what's happening across the banks which contribute maximum. तो we are on the day range high side. साफ दिख रहा है आपको. HDFC Bank is leading here again and supported by Kotak and Axis. लेकिन ICICI is under pressure. So right now just need to wait and watch because बैंक निफ्टी के levels अभी भी ऐसे नहीं है कि जहाँ we can be very confident about going for a buy trade. So right now just wait and watch, observe the market. Let's see what trend it comes out with. निफ्टी की तरफ जाते हैं फटाफट से. तो देखिए विक्स जो है आपका नीचे की तरफ है, ये बात याद रखना बाय द वे. तो निफ्टी का जो है आज स्टार्ट जो हुआ है 18,053 के अगेंस्ट 18,074. वेरी वेरी फ्लैट. द हाई मेड इज roughly around 18,100. So it's also trying to show up with some move. Let's see what it and where it goes from here. तो sector wise अगर हम देखेंगे तो it's metal and IT but other sectors are down right now. And just one second friends, चैनल को प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. लेट मी सेटल माई सेल्फ ऑल्सो. थोड़े से हिकअप्स आ रहे हैं मेरे को. प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. लेट मी सेटल माई सेल्फ. सो anybody wants to join this channel, just you can type Stock Guru NKS and you're going to directly reaching there. ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग यहाँ पर मेटल्स ठीक कर रहा है. उसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर्स में कुछ खास नहीं हो रहा है. आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर डाउन. सिर्फ मेटल में एक हलचल है तो इसका इफेक्ट यही आएगा कि नेट नेट कुछ ज़्यादा मार्केट करने के मूड में लग नहीं रही है. अगर हम बैंक निफ्टी के PSU और प्राइवेट बैंक्स के डेटा को देखें तो वहाँ पर यू हैव HDFC ट्राइंग टू मूव बट PSUs आर अंडर प्रेशर. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग
which comes to mind is कि ये जो upside है इसके ऊपर we cannot rely. Okay, so that's what I am trying to analyze and मेरा conclusion तो यही है कि इस वक्त जो है इतना आप रिलाई नहीं कर सकते मार्केट के मूव पे, बैंक निफ्टी की अपसाइड मूव पे. ओके, so because there is imminent pressure visible, so today is remember 18th, we are in the middle of the week, and this is what the scenario looks at 1 minute level और दोनों इंडाइसेस के बीच में. एंड अभी तक तो कोई ऐसा मूव नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस दे टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड. ओके, सो आई रिपीट, टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड. सो just wait and watch, let market try to take a direction, but looks like weak note पे है हम. We are on the weaker side of the day. Any rise will need to go substantially above 20-day exponential moving average of Nifty, which I think I've explained you in my डेली एनालिसिस वीडियो. तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे डेली एनालिसिस वीडियोस को मिस मत कीजिए. यू कैन गेट दोस वीडियोस इन द चैनल. I come out with every day analysis of market next day prediction. So those who are seriously interested to learn, uh, try not to miss. One second. $18,065 यानी 20 डेमा 18,065 के ऊपर है. सो निफ्टी somehow showing certain signs to move up, or bank nifty के लिए the level is 42,500. So bank nifty actually will show better things when it's above 42,500. दोनों indices are started to give a little of upside move now in spite of initial hiccups. तो दोनों अपने डे हाई के कैंडल को पार करते हुए, both nifty and bank nifty. So we will definitely try to see a trade out of it now. So stay tuned. And let's see how much can be relied upon on the data. Okay, ये है आपका ट्रेड सेटअप. बैंक निफ्टी भी 42,400 की तरफ बढ़ता हुआ, तो वी नीड टू see among the two. So bank nifty is showing much more better result comparatively because HDFC Bank is trying to move upside. So this data is surely indicating कि हम लोग जो कल जो थे, we are above, very well above yesterday's levels. Okay, so we can look out for a trade in bank nifty also on the call side. So whatever is the data, उसमें एक चीज आप समझ लीजिए, पीसीआर भी देख लेते हैं एक बार. वी शुड ऑलवेज गो बाय द फ्लो. एंड थोड़ा सा सिस्टम में आई एम फाइंडिंग लिटिल इश्यूज, तो पैडन मी ऑन दैट. सो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. So much verifications. There's no end to this, unfortunately. So that is killing our time, unfortunately. Really can't help it on this. The verification code का ही वेट कर रहा हूँ मैं.
गिव मी अ सेकंड. देखिए पीसीआर का डेटा इज वेरी वाइटल, दैट्स व्हाई आई एम वेरी peculiar on certain things. Let them take time, not an issue. Put call ratio is simple. A put call any pcr above one is a real healthy sign. So if you see nifty showing good strengths among the two in terms of pcr, and bank nifty has taken up a level which is above 40 to 400 area. So things looking nice. So we cannot be on the put side trade. So that's very clear indication. So whatever trade you want to take, you need to take positions on the call side trade. So I'm creating a position for my premium members in my call side trade. You want to join that, you need to go through WhatsApp number and get in touch with me for further details. Okay, तब तक आप सिर्फ एक अंदाजा मैंने आपको बता दिया है कि whatever is initial moves which we are seeing in the market is indicating that we cannot be on the sell side of the market today. Okay, so what you can look upon is on 42 200 strike on the call side of bank nifty. Okay, anything coming in your mind you should try and ask in the stream. आपके मन में कुछ आ रहा है सवाल तो आप स्ट्रीम के थ्रू कोशिश करिए पूछने की, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की. चैनल के साथ बने रहना है, बेल आइकन दबा के चैनल को देखना है, and don't miss the action as the market looks pretty fine. कोई ऐसी बात नहीं है. इस स्ट्राइक के अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो everything on this data part looks pretty okay for this one. So that's what we will try to pitch it up for today. As I see Bank Nifty stands and yeah is trying to move that 40 to 500 area. Okay, तो बैंक निफ्टी कोशिश तो कर रहा है. सो इसलिए ये जो स्ट्राइक है इसके ऊपर नज़र बना के रखना है आपको. वॉल्यूम्स की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है. जिस तेजी से बढ़ना चाहिए उस तेजी से अपसाइड मूव आ नहीं रहा है, बट स्टिल नॉट बैड. यू कैन सी. सो वी आर एट 42463. तो कहीं ना कहीं ओके, दैट्स द मूव आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो कहीं ना कहीं आज धन का जो है इंटरफेस बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा है ये, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग यू रेट्स. जितनी तेज़ी से आपको चाहिए उस तेज़ी से वो रेट्स नहीं दे पा रहा है. बट एनीवे हम लोग चार्ट के थ्रू देख ले रहे हैं, वी विल गेट एन आइडिया ऑन दिस. ओके, तो देखिए बैंक निफ्टी का मूव तो दिख रहा है ऑन द अपर साइड. इट्स ऑलरेडी क्रॉस 42463. तो आप 42 200 के ट्रेड पे ध्यान रखना, बस इतना ही मैं कहूँगा. रेस्ट यू टेक योर ओन पोजिशनिंग इन दैट, बिकॉज depth details I share at my premium groups. So well, let me check it up. I think there's some issue with the कहीं ना कहीं data is not getting updated. One second. The rates shown here are not matching the rates, is it? Can somebody confirm me on this? क्या कोई बता सकता है कि जो रेट्स यहाँ दिख रहे हैं 42 200 के, आर दे मैचिंग विद व्हाट द रियल रेट ऑफ 4200 कॉल? Because I'm a little worried on this part of the data. One second friends, आज थोड़ा सा मुझे glitch आ रहा है. Really pardon me on that. Okay, ठीक है, sorted है, रेट अपडेटेड है, not an issue in the rate.
सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि बैंक निफ्टी ने अपना अपसाइड ट्राई किया 42468 पे उसने रिजेक्शन दिया पहला. सो द हर्डल हेयर इज वेरी क्लियर 42500 फॉर बैंक निफ्टी. ओके, anything coming in your mind you may ask me through the stream, during the stream. Let's focus on Nifty also. Nifty has done the high of 18116. तो निफ्टी का 18116 का हाई लगा अभी तक. तो दोनों डेटास तो स्ट्रेंथ दिखाते हुए बट देन दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द मूव आई गेस. यही ज़्यादा दिख के आ रहा है इस वक्त तक. तो बट स्ट्रेंथ है मार्केट में, वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं कम है. यही मेरा पहला impression about today's market is. Okay, चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए. आई वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस चैनल वर्थ वाइल. छोटे मोटे हिकअप्स तो आते रहते हैं, दैट्स पार्ट एंड पार्सल. सो वन शुड नॉट बी rather concerned about that. Thing is we need a trade which can make money for us, right? We need something which gives us confidence as to what market is trying to move, कि हम उस मूव को पकड़ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग नीड टू बी सीन. चैनल के साथ बने रहना है. एज आई कीप सेइंग दिस, रिपीटिंग दिस, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि वी डोंट मिस द एक्शन. आपके मन में कोई सवाल है आप जरूर पूछिए. अभी तक कोई ट्रेड सेटअप में नहीं है. You need to have a lot of patience if you really feel like you want to earn from this market. बिना सबर के काम होगा नहीं. स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ जाएंगे अब हम. बिकॉज इंडेक्स में मुझे लगता है टिल बैंक निफ्टी इज नॉट अबाउ 42500 एरिया, बाई साइड का कॉन्फिडेंस आएगा नहीं. सो लेट इट रीच दैट लेवल. ओके, सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली यहाँ पर. तो आई विल ड्रॉ डाउन दोज लेवल्स ऑल्सो फॉर यू पीपल. देखिए, एट 5 मिनट्स बेस पे वी शुड अंडरस्टैंड दैट वेयर इज अ हिकअप कमिंग इन निफ्टी. तो निफ्टी का हम लोग एक बार बना लेते हैं ट्रेंड लाइन, नॉट ट्रेंड लाइन, a horizontal line is need to be drawn here, which will, yeah. So what's clearly evident for Nifty is this level. Okay, can you see that? So we can say clearly say कि Nifty will gain the strength. Oh, come on. ओके, फेयर है ना. तो ये निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ. आपके मन में हेलो हेलो आनंद, वेलकम आनंद. Pardon me Anand for certain hiccups going on. So let me settle myself. If there is anything in your mind, you may please ask Anand. So one thing is clear, the data is what the data is indicating is what we will do, right? Clear? We need one good trade and that will make our day, right? So it's very clear. Bank Nifty maybe it is 42.5, 450 is what as per the charts, but I still feel clear. So this is what I feel for Bank Nifty and Nifty. So let's see what happens. So accordingly we have to take positioning in the trade. अभी तक no trade zone, nothing to be done. Stock specific actions हम लोग अगर देखना है तो we can see that HDFC is leading along with Wipro. So HDFC पैक दोनों जो हैं वो अच्छा करते हुए अभी.
सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के केस में हम लोगों को पीसीआर का एक देखना पड़ेगा, क्या सिनेरियो चल रहा है, व्हाट्स द पुट कॉल रेशियो, बोथ ऑफ द पीसीआरस आर pretty okay, reliable. Nifty is well above 18113, which is uh, as good as 50-70 points above yesterday's close. तो पॉजिटिव डेटा है, इतना तो मैं कह सकता हूँ फिलहाल. Rest we'll see how it shapes up. So we'll go to Nifty's option chain also and try to analyze through that option chain key what can be a trade setup for this. Okay, so this is your Nifty option chain. Advanced Dhan is a good broker platform. You should go for it. मैंने लिंक दिया है. If you have not opened account, do open it through my link, and it's worthwhile. यही मैं कह सकता हूँ कि it's got all the things needed, and so you can definitely take advantage of this broker platform Dhan. देखिए निफ्टी में हमें 18,100 के ऊपर देखना पड़ेगा. वी नीड टू कीप एन आई ऑन 18,100 कॉल आई गेस. सो दैट वुड that's around 70 odd. 70-71 is what the price for that is going on, and at the money का ही है ये. So that's why I've seen it, and if there is any other one which comes to mind in this entire setup, well, it's like we can go for 18,000 call also. 18,000 का कॉल भी बुरा नहीं है. This can be marked as a shortlisted entity. तो इसको जाने दीजिए. So I've clearly told you about two trades. One was your Bank Nifty. So Bank Nifty is roaring to go now. Okay. So 42,200. Keep an eye on that. This should work. And for more further depth in trade entries and all those things, you need to join my premium membership. तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी विल मूव टुवर्ड्स मच नीडेड फॉर 42,600 एंड अबव एरिया. चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना आपने, बेल आइकन दबा के. ओके, so stay tuned with the channel by pressing the bell icon. So the first trade setup coming. No, I am into more option buying. Option selling में you need to be having good capital also. अगर आपको option selling करना है, you need to have good understanding about hedging aspects also. So, but देखो, when market is showing no specific direction, then I think you can go for the option selling, and especially VIX, if it's on the lower side, you should not go for selling, because if today you see India VIX is low, so the fear index is less. That means option buyers will take better advantage of the day. That's why my analysis, Anand. मैं ये कहूँगा आनंद, आपको अगर प्लेन ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको you need to have a capital beyond 1 lakh, that too for just one, what do you call, for one lot. So that doesn't make any sense, is it? तो आपको ऑप्शन बायर ही इनिशियली बन के चलना है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन दबा के, सो बी रेगुलर ऑन दिस. एंड आई ट्राई एंड डू दिस एनालिसिस ऑफ लाइव स्ट्रीम daily at least once. I don't go for that non-stop 6 hours, 5 hours stream, because that's something I can't, because I'm tied up with my other works, as I have people who are there in my prime group, so I need to give them continuous guidance, and there are many other things.
So stay tuned with this channel in whatever stream time area I can guide you. I will guide you. If there is anything coming in your mind, you can ask me. So 42,200. In case anybody wants to go for a trade, that's the right strike I feel. आप जा सकते हो उसमें और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ तो है, तो आप सेल साइड में तो नहीं रहना चाहिए. दैट्स व्हाट मेरा ये कहना है. दैट्स व्हाट आई फील. रेस्ट लेट्स सी हाउ मार्केट शेप्स अप. बस चैनल को आप सपोर्ट करें बेल आइकन दबा के. वॉल्यूम्स आई गेस आर लैकिंग इन द मार्केट. तो मूव आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाट इज द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द मार्केट ऑफ टुडे. Any query, any question coming, you can keep asking. I will try to answer. मन में किसी के कोई भी सवाल है जरूर पूछिए. चैनल के साथ रहिए बने. और आई हैव गिवन द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द मार्केट दैट we need to be a little positive today for the market, even if it is bank nifty. I've given certain you know what do you call trade setup in a sense ki what you should ideally go for in terms of trade today. तो अभी तक तो things looking okay. Let's see how it's shapes up little more after a while. So Bank Nifty, we see what's happening. HDFC is picking pretty okay along with Kotak. And देखिए मेरे हिसाब से 42,550 मैंने और इट्स एक्चुअली 450 नॉट 550 है ये डेटा. है टू रिकरेक्ट. ओके. So the trade is showing strength, so you can see the correlation. So market looks fine. And this one above. और देखिए दोनों 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 इंडाइसेस आप ध्यान से देखिए. बोथ आर ट्राइंग टू पिक अप दोस एरियाज. उनके ऊपर जाने के पास रिजेक्शन आना तो नहीं चाहिए लॉजिकली. रीटेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. बट स्टिल let's see. Little volume is the push is not that much, but still can be relied upon. अभी तक तो यही लग रहा है देख के डेटा को. So stay tuned, keep an eye on the market, and let's see what shapes up from here. Because एक बड़ा upside आएगा तो things will start moving the way we want it to. All we need to do is be very careful on our stop loss management, because हमको जो important thing है loss management, that needs to be, we need to be very careful on that. Because as you see, the trade is started picking up, okay, slowly steadily. Okay, so accordingly you need to be careful on your SLs. तो बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों. मैंने आपको जैसे बताया मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, एंड दैट्स precisely is what is happening. You need to be careful on your stop loss management. I keep saying that a small stop loss, an up move in the stop loss will ensure the risk to reward ratio in a much better manner.
तो ट्रेड बन रहा है, द ट्रेड इज मूविंग इन द डायरेक्शन विच वी वांट इट टू गो, and bank nifty is also showing that strength. Both nifty, bank nifty are showing the required strength. So as I told you, आज आपको sell side में नहीं रहना है. So either you can sell a put or you can buy a call trade. Simple है. Slowly you need to keep modifying your stop losses on the upper side to bridge the gap. Okay. Okay, so keep doing it. आपको अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते रहना है, ट्रेड के साथ बने रहना है, बिकॉज व्हाट वी आर लुकिंग हियर इज बैंक निफ्टी जो है एटलीस्ट 42,600 के लेवल्स की तरफ रीच करने की कोशिश करेगा. दिस ट्रेड इज वर्क प्रीटी ओके. सो वन गुड ट्रेड मेक्स योर डे. Now it's all about the capital which you are going to deploy. तो देखिए, चैनल के साथ बने रहिए. मैंने पहले ही कहा था आपको कि द गाइडेंस विल बी गिवन अकॉर्डिंगली. आई हैव गिवन यू लेवल्स इन द स्ट्रीम. मैंने आपको स्ट्रीम में लेवल बताए, मैंने आपको स्ट्रीम में स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट बताया. अभी हम even if it requires a stock option, we will go for it, try to see it rather. Because HDFC twins are doing very well, याद रखना है. तो HDFC ट्विंस के अपमूव की वजह से जो है मार्केट इज market is showing strength. So that's your trade actually. We'll go to the Nifty and यहाँ पर हम देख सकते हैं HDFC is the one. So how do we go about it? तो हम उसमें ऐसा करते हैं, HDFC Bank. A lot of patience. Yeah, thank you, RJ Anand. What are you doing? You can tell something about you, RJ Anand. By name, so don't look like anybody who is much keen on market or something. If possible, you can tell something about yourself, RJ. The channel is old, RJ. It's just need to pick up organically. So it is some 1100 subscribers are there. It's not a new channel, but still thanks for your wishes. HDFC Bank is moving pretty fine, but ये कितना और ऊपर जाएगा अगर ये हमें देखना है तो वी नीड टू ड्रिल इट डाउन. और वो कैसे करते हो, आप वन डे चार्ट पे उसको देखने की कोशिश करिए. बैंक निफ्टी आई टोल्ड यू 42,200 इज योर ट्रेड एंड जिसके ऊपर यू कैन रिलाई. तो HDFC बैंक को हम देखना चाहें अगर और ड्रिल डाउन करके कि वेयर आर द एरियाज फ्रॉम वेयर इट कैन मूव into the next direction. Well, clearly 1640 and above is where it can show better strength. तो इसका बहुत क्लियर है 1640 के ऊपर अगर जाएगा HDFC बैंक, it will really do much better. तो
1640 HDFC बैंक, रिमेंबर 1640 एरिया. So what kind of a strike can one go for in case of this? तो देखिए स्ट्राइक आपको सिंपल करना है लाइफ को, तो स्ट्राइक वही देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है एंड वेयर योर एस्पेक्ट ऑफ डेल्टा इज ऑल्सो एबली टेकन केयर. तो you can go towards 1650 strikes, even 1620 strike is also not bad. So this is how you do it. Okay, so this is trading at what, 26 odd rupees, this costing around 14-15,000. तो 27 रुपए के आसपास है ये आपका, और अभी तक इसका हाई 28 का है और 550 की लॉट है ये. So this can really move well if HDFC moves above 1640 area. Okay, and for this trade we already discussed about this one. uh, it made a high of 380, I guess, ये वाला. It touched 380 areas, तो ठीक है, not bad. So आपको देखते रहना है कि ये एक एरिया के, देखो एग्जिट nobody can give. Okay, a perfect exit can't be given by anybody. You can only go for a level. तो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन कमिंग, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. अभी तक हम मार्केट का एक बार वापस रिविजिट कर लेते हैं. ऑलमोस्ट 42,500 बॉस की स्टैंड, वहाँ से वो रिवर्स हुआ है. निफ्टी इज होल्डिंग इटसेल्फ एट 18,130 एरिया, 18,100 एरिया के ऊपर. इट इज स्टिल फाइन, नॉट नथिंग टू बी वरीड अपॉन. एंड एज फार एज स्टॉक्स, एक बार मैं वापस रिविजिट कर लेता हूँ अमंग sectors, what's happening, any query to ask. So you can see metal, finance, bank nifty, private IT. So PSUs are actually not participating. तो वो एक रीज़न हो सकता है PSU की नॉन पार्टिसिपेशन की वजह से, वो जो मच नीडेड पुश है वो शायद मिस हो रहा है. दैट डेफिनेटली कैन बी वन ऑफ द रीज़न की जो, एंड वॉल्यूम्स जो हैं दे आर मिसिंग. We can clearly see there are low volumes that may be affecting the upside move of both the indices. Okay, India VIX is stable, कोई ऐसी बात नहीं है. Any VIX going up is not good for option buyers. तो ऐसा तो कुछ है नहीं अभी तो जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी आनी चाहिए. एंड so if we need to see the action in terms of stocks where they are doing pretty well, some sort of a reliable breakout, तो MFSL is the one. I will check it up. So देखिए कैसे करना होता है. I'm just trying to tell you so you can learn as much as for Max Financial Services. तो इसका प्राइस चल रहा है 824. आई विल गो टू द ऑप्शन चेन. देखिए धन में अकाउंट नहीं, तो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, बिकॉज ये जो methodology मैं अपना रहा हूँ, that's open interest breakout, that you will only understand once you have some sort of one place account. So this looks pretty okay. Sort of a trade 820 cross हुआ है इसका, and on the charts also we will see on a one day frame, and we'll come to know about it. ये देखिए वन डे लेवल का चार्ट का स्ट्रक्चर है. सो ये हमें लगाना है देखने के लिए कि कोई कोई बड़ा ब्रेकआउट, क्या विजिबल ब्रेकआउट है या नहीं है. लुक्स लाइक कोशिश हो रही है इसकी. मुझे लगता है अबव 830, 830 MFSL शुड डू वेरी वेल. सो देखिए यही वो लेवल्स हैं, यही वो तरीके हैं. दीज आर द मेथड्स विच यू नीड टू लर्न, because on a day basis somewhere here only it looks
more reliable. ये देखिए, can you see these are the areas of resistance it is having on the upper side? So 835 and above MSL, MFSL should do well. HDFC above 1640. So these are the two trades right now. If you are looking for any kind of a trading opportunity in stocks through options or even through if you're going for future also. So that's the scenario right now. HDFC Bank, MFSL are the two picks. ज़्यादा आपने करना नहीं है ट्रेड. फर्स्ट ट्रेड विच I suggested at my this thing premium member group, and that worked pretty okay. बाकी चैनल के साथ प्लीज कीप सपोर्टिंग इट. Keep watching, keep supporting the channel. If there is anything, keep asking. I will try to answer that. अच्छा, दूसरा आपको क्या यूज़ करना है? चार्टिंग जो है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल एज ए स्क्रीनर, सो दैट कैन गिव यू लॉट ऑफ insights की where are the right opportunities in terms of breakouts. जैसे आई जस्ट कीप सीइंग दिस गोल्डन क्रॉसओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहीं बाई चांस कोई ट्रेड गोल्डन क्रॉसओवर कर जाए, बट आई ओनली गो फॉर एफ एन ओ ट्रेड्स. यहाँ पर खाली एफ एन ओ के ट्रेड्स को देखता हूँ मैं, कैश के लिए नहीं. यू नीड लॉट ऑफ कैपिटल, तो वो नहीं मैं देखता हूँ. सो ऑन दिस बेसिस विल जस्ट सी इफ देर इज एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कमिंग. रिलायबिलिटी के हिसाब से तो हम उसको जरूर देखेंगे. एनीथिंग कमिंग इन योर माइंड, यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चन. आई माई स्ट्रीम इज ओनली गोइंग टू कैरी ऑन फॉर रफली 1 आवर, नॉट बियॉन्ड दैट. ये बात आप याद रखना. 15 मिनट के ऊपर इसमें से कोई ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है. तो ये जितने भी ब्रेकआउट एरियाज हैं, इनमें मैं ढूंढता हूँ स्टॉक्स. सो आई एम शेयरिंग यू ओपनली द methodology which has worked. You may try it for your own this thing. So thing is, जो ब्रेकआउट है वही डिसाइड करेगा आपका. ब्रेकआउट विद वॉल्यूम याद रखना. ब्रेकआउट alone will not do anything. So वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, you need a stock which is showing a breakout but with volume, and that too एफएनओ का होना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला होना चाहिए. कैश सेगमेंट में मैंने ज़्यादा दिखता नहीं हूँ. तो अब देख लीजिए, मैं धीरे धीरे देख राइट्स आया, लेकिन नो, मैं वही देखूंगा एफएनओ की साइड में जो मुझे लगता है कि एक पोटेंशियली अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा. ओके, बहुत पेशेंस चाहिए. वही मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ. यहाँ जिनको बहुत जल्दबाजी है तो वो स्टॉक मार्केट छोड़ दो. छोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, मैं बोलूँगा. कुछ नहीं हो सकता. ये कोई भी एनी पैटर्न विल डू. मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एनीथिंग अपसाइड डाउन साइड, हमको देखना है रिलायबिलिटी कितना है, राइट? सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग इट. टू डे बुलिश, प्योर बुलिश. सो एनी ट्रेंड नीड टू बी रिटेस्टेड, बट पहले ट्रेंड पता करने के लिए स्टॉक तो ढूंढना पड़ेगा ना. तो वॉल्यूम के साथ हम देखते हैं. तो एच सी एल टेक जो है 1119, देखो अब यहाँ से मैंने एक क्या फाइंड आउट किया है, एच सी एल टेक. सो आई विल शो यू हाउ आई डू. तो मैं एच सी एल टेक का चार्ट लगाऊंगा. ये मैंने ऐड किया एच सी एल टेक. 1121 इसका प्राइस चल रहा है. मैं इसका ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने के लिए खोलूंगा यहाँ पर. यस. तो यहाँ मुझे ये दिख रही है स्ट्रेंथ इसमें 1120 के ऊपर. इसमें देर कैन बी अप मूव. तो वो अप मूव को कंफर्म कैसे करेंगे? फॉर दैट विल गो टू द चार्ट्स. इन द चार्ट्स, एज यू नो, आई गो टू द डे चार्ट. डे चार्ट ही आपको देखना है. जो मैं मेथड बता रहा हूँ दैट इज़ मोर रिलायबल, बिकॉज 15 मिनट, आधे घंटा वो सब नहीं देखना है आपको. बिकॉज यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए कि इज देयर एनी विजिबल ब्रेकआउट एरिया जो इसको एक कॉन्फिडेंस देगा इस चार्ट के बारे में. तो मैं और भी ज़्यादा डेटा अगर देखने चाहूँ कि रेजिस्टेंस एरियाज अगर आवरली बेस पे कहीं मुझे दिख रहा है कुछ क्या, तो ऐसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कंफर्मेशंस. इट लुक्स लाइक ये 1140 की तरफ इसका अपमूव आ सकता है. Impatient trading is transferring money from the, absolutely right. It's all about that.
That is the reason why short sellers have a lot of patience and they know that end of the day they are going to win the game. But momentum players are also very much in action nowadays. It depends upon which side are you in. देखो no place on earth, yeah, no place, yeah, no job on earth is there which will be very easy to make money for anybody, right? So you need to slog it hard. आपको मेहनत, you have to have that conviction, faith, confidence, psychology. You do any job, anything. You do trading, you do any other thing. You do something in sports. So a lot of patience is needed. So clearly we see some sort of a hurdle यहाँ पे 11:30 areas पे, तो still work in progress, cannot be think upon, you can't think it as a trade here on this one rise. बाकी जो है बैंक निफ्टी का, तो we had already taken small एक chance in the 42,200 call trade, which was pretty okay. Nothing great happening in max financials also, वो भी can't be fully rely on that too. HDFC is much better above 1640 areas. Below that, still not giving any full on strength. So not an easy market as usual, हमेशा की तरह आज भी, but still जो opportunity provide की गई थी सुबह, that was good enough for Bank Nifty. So right now, तो there's no visible trade again. Again, let's go to the charts. Well, देखिए, both of them have went to certain level and they have returned back. तो वही चीज़ है, ऊपर में strength नहीं है. That's very much visible in this around 40 odd minutes stream. We could identify one opportunity in Bank Nifty 42 to 200 call and it worked pretty okay. HDFC बैंक में भी कुछ नहीं है, तो this needs to be moved out. वॉच लिस्ट को लगातार क्लटर नहीं करना है. यू नीड टू हैव क्लियर ट्रेड्स which you believe are going to do something for you. You can't jumble up trade, otherwise what will happen is आप गलत करना शुरू कर दोगे. अननोइंगली क्या होगा, आप कॉल की जगह पुट भी ले लोगे. ऐसे ब्लंडर्स भी होते हैं. होप आप समझिए. चैनल के साथ बने रहिए. वट एवर पॉसिबल ways and means I can provide to make you a little confident about the trading aspects in options, I will do it. All you need to do is just support the channel and stay tuned on a regular basis, okay? So VIX is in control. Any VIX on the red side indicates कि option buyer should not be worrying that much. ये मेरा अपना conviction है. PCR is as usual vital. So PCR above 1 is clearly indicating कि you cannot be on the sell side today. अगर ये नीचे भी आता है, तो again you need to be on the buy side of market. आप sell side में नहीं रह सकते. 42,325, 42,350 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, यू कांट बी वरिंग अपॉन. नीचे के लेवल से वापस जो है बाई साइड का ही ट्रेंड बनेगा इसमें. सेम इज विद निफ्टी अबाउ 18,080 levels, not an issue. Just give me a break.
आई एम बैक। तो देखिए सुबह से मार्केट अपना एक फ्लो बनाने की कोशिश करती हुई जैसे कि आप देख रहे हैं कोशिश की गई 42,500 एरिया पे बुक से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस आया और 18,150 के आसपास जानते हुए निफ्टी भी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन कहीं से भी आपको ये इंडिकेशन नहीं आ रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, सो बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मेरा तो यही मानना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपको क्या लग रहा है? व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आपका अंडरस्टैंडिंग को मैं भी समझूंगा, सीखूंगा। दैट इज़ वाई दिस चैनल इज़ देयर फॉर एवरीबडी, सो दैट views can be exchanged. Maybe a place where someone will feel a little more calmer in terms of market which is so volatile, so you need a place where you can feel a peace in the mind. Okay, so maybe this is the place that could give you that peace. So please, please, please support the channel, make it big by encouraging it and staying with it on a regular basis. So I'm running the whole show. There's no team of mine. I don't have any Telegram group. I just have on my premium group which I run, and people interested can definitely go through my premium group through my WhatsApp number. They are most welcome. So try and apply the methodology which I am trying to do, either if it is a breakout levels finding in stocks or doing some index trading. Interesting field. It's just question of how much you have in terms of patience. So FII DI का एक data is indicating certain things like yesterday's data. If you see carefully, so uh, FII just somehow purchased a little bit, but end to end, they've already are net sellers. They have sold already 17,958 crores in the month of January compared to the DII, which has just purchased around 13 and a half. So maybe it's like budget which is in the minds of players across world. Market बहुत flat है. If you see carefully, yesterday US markets fell. There was one very bad result from one of the companies जिसका नाम भूल रहा हूँ मैं. It fell by around 7% down there. World, I don't know. People have a mixed feel कि क्या ये recession होगा नहीं होगा, but time will tell. As a trader, you need not be worrying upon all those things. Only as an investor, one need to be worried very much, obviously, because right now, तो most of the returns are negative only on year-on-year basis in Nifty. If you see Jan to Jan comparison, we are minus 2% on that. So low, slow volumes are not giving that kick, but definitely सुबह का एक trade था as an opportunity, but right now it's all dull scenario in front of you. Let's wait for some little more time, and then I will surely winding my session of live stream. So anybody interested, please keep watching the channel, supporting it. देखिए आजकल जो ट्रेंड है वो कभी भी चेंज होता है, एनी मोमेंट इन द मिड डे ऑल्सो. इफ इट इज समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग very fast in the first hour, something will happen in the mid. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखें, बेल आइकन दबा कर देखें चैनल को. ज़रूर सपोर्ट करिए, एंड वेरी श्योर इट विल बी.
नाइस इफ यू कीप डूइंग इट। तो डे रेंज के ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी है आपका, समराइज एंड बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी आर वेल अबव द डे रेंज, सो नथिंग स्टिल टू बी वरीड अपॉन ऑन मार्केट मूव्स। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लो साइड में एम यू है, तो कोई बहुत गिरावट नहीं है किसी ट्रेड में। ओनली थिंग इज कहीं ना कहीं वॉल्यूम की मिस आउट इन, वी आर मिसिंग आउट वॉल्यूम्स। बाकी market looks okay. Metals leading with the pack, wherein Hindustan Zinc is doing something really well. तो एक बार हिंद जिंक देख ही लेते हैं। So just see the data of एक्चुअली सुबह ही 3% बढ़ चुका है, सुबह से 3% इसका अपसाइड आ चुका है। इट्स अ कैश ट्रेड, सो कैश ट्रेड्स में नहीं देखता हूँ, रियली सॉरी, नीड टू मूव आउट ऑफ इट। विप्रो showing trying to move up IT में, what is the available action if at all across sectors, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर जो आपको हम्म, वो कॉन्फिडेंस दे कि आप किसी ट्रेड में बैठ जाए, ऐसा तो नहीं लगता। इंडेक्स में भी बैंक निफ्टी इज स्टडीयर, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट बी ऑन द सेल साइड टुडे। वापस मैं आई कीप रिपीटिंग दिस, मोनोटोनस है, बट आपने बेचना नहीं है, ये बात आप याद रखिए। बिकॉज माई स्ट्रीम मे नॉट बी देयर, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट्स टू बी डन एंड व्हाट्स नॉट टू बी डन। बाकी आप कीप सर्चिंग फॉर दिस डेटाज वेयर like bullish scan में, intraday bullish scan, there's so many in this charting। आपका वापस बस यही है कि इसमें कैश स्टॉक को मैं नहीं ज़्यादा इतना मानता हूँ, तो आई अवॉइड इट। सो आई एम नियरिंग माई 1 hour फ्रेंड्स, so स्टे ट्यून्ड रेगुलरली फॉर दिस चैनल। इस चैनल में मैं रोज रात को एक एनालिसिस वीडियो देता हूँ। आई वुड लाइक टू सी यू व्हाट आई, if possible I will show you, so please go through my yesterday's assumption on market के बेस पे। तो आप साफ देख सकते हैं कि एफएमसीजी ने अच्छा किया है। कॉल रेशियो क्योंकि यही जनरली ग्रीन्स में ही क्लोज होती है, ने बहुत अच्छी खरीदी करी, तो आज यूएस मार्केट्स खुल ऐसा ही रहा, तो देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 41,500 इन केस इफ दैट ब्रेक्स। तो हमारी अगली सपोर्ट जो है फिर से 41,700 पहले आएगा, उसको तोड़ने के बाद देन अगर आप देखिए तो अगली सपोर्ट सीधी 41,500 के आसपास So ही this is है। my yesterday's नीचे गैप video काफी है, ये of बहुत साफ analysis. सीक्वेंस दिख रहा है, और ऊपर का रेजिस्टेंस वही है 42,350, 42,325। इंटरडे की बात करता हूँ मैं, पोजिशनल की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल डेटा समझ में आ रहा है आपको, यही रेंज को आपको प्ले करना है। कल नीचे की तरफ जाए तो एक चांस ट्रेड बनता है, अगर वो 41,800 को होल्ड कर जाए तो 41,850 याद रखना, नीचे से बाई का एक चांस बनता है। अगर वो टूटता है तो फिर 41,700 तक भी सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता ही दिया है, जो लग नहीं रहा है कल गैप अप होगा, बिकॉज अगर हमको समझना है प्रोबेबिलिटी तो आप ये चीज़ नोट किया करो। So निफ्टी डेली 28,000 एनालिसिस तक करता है, हूँ मैं। लगभग देखिए दोनों में मैंने जो डेटा 18,050, आपको बताया है, ऑलमोस्ट 18,100 मार्केट इज है। बिहेविंग द सेम तो वे इफ नॉट 18,100 जब अगर एग्जैक्ट। हुआ तो फिर एक अपसाइड ट्रेड बनता है, नहीं तो बाई ऑन डिप के हिसाब से 17,850 दिखता है। एक चीज और आप याद रखना, 20 डे एक्सपोनेंशियल प्लीज डोंट मूविंग मिस एवरेज माय बहुत बड़ा चैनल सीक्वेंस देता है। चलो मैं यहाँ पे एक विदाउट एनी डिले। जो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को रेगुलर, जैसे कि मैं चीज़ें बताता ही रहता हूँ, वो उसमें आप देखने को आपको मिलेंगी, एनालिसिस मिलेगा। सब्जेक्टिव वीडियोस के ऊपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इफ़ पॉसिबल आई विल कम आउट विद समथिंग। All I need is your good support on a regular basis, and I think with that I will wind it up because nothing is happening concrete जो हमें फर्स्ट आवर को पुश ट्रेड के लिए हेल्पफुल होगा। सो मार्केट विल बी वेरी डल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वॉल्यूम, लेकिन remember that in the middle of the day opportunities will come, and definitely when you are in the last hour the action will be there. So please keep supporting this channel, and thanks for being on this channel. So bye bye, and take very good care of yourself.